Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 9th. So students, in the previous video we have started reading with our chapter number 4 from the book Beehive, and the name of the chapter is A Truly Beautiful Mind, right? And in this chapter we were reading about the great personality, the great scientist, that is Mr. Albert Einstein. Okay, so in the previous video we have read about his early childhood. Okay, so now we will continue the chapter in today's video. So let's begin. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. Okay, so in the previous video we have read about his school days. Okay, उनके initial school days थे, that we have read in the previous video. So now the writer is saying that Einstein, he was highly gifted in mathematics and interested in physics. Okay, so mathematics and physics, these two were the subject in which he was having a lot of interest. Okay, and after finishing his school, Einstein decided to study at a university, and where? In Zurich. Okay, but science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with a walrus mustache. Okay, so now the writer is saying that he was very much interested in mathematics and physics, but science wasn't the only thing, okay, that appealed to the dashing young man. Okay, so now Einstein, when he was studying at a university, okay, so now he was a young man. Okay, and he was very dashing. Okay, so what dashing means? Dashing means a person who is very smart in dress and in manners. Okay, so when he was at university, he was very smart, he was having a lot of good manners. Okay, so he was a dashing young man now, and for him science was not the only thing, okay, in which he was interested. And writer is describing him as a man who was having walrus mustache. Okay, so what is walrus mustache? We all know about walrus. Okay, so in this picture we can see it is walrus, it is a sea creature. Okay, so all the persons who are having this kind of mustache, okay, जो बिल्कुल walrus जैसी होती है, okay, उनको कहते हैं walrus mustache. Okay, so Einstein, when he was at the university, so he was also having this kind of mustache, that is walrus mustache. Okay, so when he was at university, he was very dashing. Okay, he was very smart, he was a young man with walrus mustache. Okay, and for him science was not the only thing, okay, in which he was having a lot of interest. Okay, so science के अलावा और क्या था जिसमें वो equally interested थे? So let's see. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Maverick, whom he found to be a clever creature. Okay, so next the writer is explaining his thing, and he is saying that apart from the subjects that are mathematics, physics, or we can say science, he was also having a special interest in a fellow student. Okay, and who was this fellow student? The name of this student is Mileva Maverick. Okay, and whom Einstein found to be a clever creature. Okay, and why Einstein, he was so much interested in this student, that is Mileva Maverick? Because according to Einstein, जो ये person है Mileva Maverick, she was a clever creature. Okay, this young serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. Okay, so now ये जो है Mileva Maverick, she was a Serb. Okay, it means she was a citizen of Serbia. Okay, so she was a Serb and she was there in Switzerland. Why? Because the university in Zurich was one of the few in Europe, okay, where women could get degrees. Okay, so Europe में जितनी भी universities थी, तो हर university में women जो थी वो अपनी education continue नहीं कर सकती थी, but जो Zurich university थी right, वो उन कुछ universities में थी जहाँ पे women भी अपनी study continue कर सकती हैं और degrees ले सकती हैं. Okay, so the person, that is Mileva Maverick, she was a Serb. Okay, but she was there in Zurich University, okay, to continue her education, to continue her study. Okay, and Einstein, he was having a lot of interest in her. Okay,
Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. Okay, and according to Einstein, always he was having a special feeling for her. Okay, and why? Because he saw in her an ally. Okay, so what is ally? Ally means we can say a friend or associate or companion. Okay, so Einstein के लिए ये जो person है, okay, इनमें एक friend, एक companion, एक associate था against the Philistines. Okay, so Philistines means person who does not like or enjoy art, literature or music. Okay, so ऐसे जो persons होते हैं who are having no interest in literature, in music or in any kind of art. Okay, so those persons are regarded as Philistines. Okay, so ये जो सारे Philistines थे, okay, इनके against आइंस्टाइन को लगता था कि ये जो पर्सन है इनके साथ वो एक अपनी एक स्पेशल बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं. ओके, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी. और ये जो फिलिस्तीन्स थे, इट मीन्स वो लोग जिनको आर्ट लिटरेचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये सारे लोग जो थे आइंस्टाइन के फैमिली में भी थे और यूनिवर्सिटी में भी थे, जहाँ पे वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे थे. ओके, विथ हुम ही ऑलवेज कॉन्स्टेंटली एट ऑड्स. ओके, एंड आइंस्टाइन जो थे वो ऐसे लोगों के साथ हमेशा एट ऑड्स में रहते थे. एट ऑड्स मीन्स इन कॉन्फ्लिक्ट. ओके, सो आइंस्टाइन का हमेशा आर्ग्यूमेंट होता रहता था, डिस्प्यूट होता रहता था ऐसे लोगों के साथ जिन्हें फिलिस्तीन्स कहा जाता है, पीपल हु आर हैविंग नो इंटरेस्ट, ओके, इन आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर. ओके, एंड आइंस्टाइन ऑलवेज ही वाज हैविंग अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट, अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट विद दोज पीपल. ओके, सो आइंस्टाइन को लगता था कि ये जो पर्सन है, ओके, इनके साथ वो एक कंपेनियन बना सकते हैं, ओके, इन सब लोगों के अगेंस्ट. ओके, the couple fell in love. Okay, so finally the couple, they are in love. Letters survive in which they put their affection into words, mixing science with tenderness. Okay, so now finally when they are in love, then they wrote letters to each other, right? And in those letters they used words mixing science with tenderness. Okay, so what is tenderness? Tenderness means kindness. Okay, so they wrote letters to each other, and in those letters they used words. Okay, and in those words they mixed science with kindness. Okay, wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. Okay, so in one of his letter Einstein wrote like this, that how happy and proud I shall be. Okay, so Einstein wrote that he will be very happy, he will be very proud when they both have brought their work on relativity to a victorious conclusion. Okay, so they were working on this subject, that is relativity. Okay, so Einstein wrote that कि जिस दिन उनका जो वर्क है, ओके, इट विल बी अ विक्टोरियस कंक्लूजन. ओके, जो उनका वर्क वो कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट, जो डिस्कवरी वो कर रहे हैं, ओके, जब वो डिस्कवरी, वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके, जो वो साथ में मिलके काम कर रहे हैं, और जब वो काम सक्सेसफुल हो जाएगा, सो दैट डे आइंस्टाइन ही विल बी सो हैप्पी, ही विल बी सो प्राउड. ओके, सो इस तरह से वो दोनों आपस में लेटर्स एक्सचेंज किया करते थे. In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. Okay, and in the year 1900, when Einstein was of the age of 21, okay, so at that time Einstein was a university graduate. Okay, so उन्होंने अपनी graduation complete कर ली थी when he was 21. Okay, but still he was unemployed, he was not having any job. Okay, he worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. Okay, so when he completed his graduation, okay, so at that time he was unemployed, but after that he worked as a teaching assistant. Okay, and he also gave some private lessons, and finally he secured a job when in the year 1902.
okay, and what was his job? He secured a job as a technical expert in the patent office in Bern. Okay, so what is patent office? What patent means? Patent is a document which gives the rights of an invention to an inventor. Okay, it means if we are having some kind of discovery, okay, अगर हमने कुछ इन्वेंट किया है, अगर हमने कुछ डिस्कवरी की है और अगर हम अपनी डिस्कवरी का पेटेंट करवा लेते हैं, ओके, देन नो वन विल बी एबल टू यूज आवर डिस्कवरी विदाउट आवर परमिशन. ओके, सो इस तरह का एक पेटेंट ऑफिस था, कहाँ पर? बर्न में. ओके, सो आइंस्टाइन ही स्टार्टेड वर्किंग देयर एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, ओके, व्हेन इन द ईयर 1902. ओके, while he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. Okay, so when he was working in this patent office, so at that time he was expected to be assessing other people's invention. Okay, so उस समय आइंस्टाइन का काम क्या था? He was a technical expert there. Okay, so he was supposed to assessing other people's invention. उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो जो बाकी लोग इन्वेंशंस कर रहे हैं, ओके, उनके इन्वेंशंस को वो एसेस करेंगे, राइट. सो ये उनका जॉब था वहाँ पे. बट एक्चुअल में आइंस्टाइन कर क्या रहे थे? सो आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट. ओके, बल्कि एक्चुअल में आइंस्टाइन वहाँ पे क्या कर रहे थे? ही वाज डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज, हिज ओन डिस्कवरीज, हिज ओन इन्वेंशंस देयर, एंड हाउ? इन सीक्रेट. ओके, he is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. Okay, so वो वहाँ पे अपने ऑफिस में वो अपने ही वर्क पे, अपने ही इन्वेंशंस पे, अपने एक्सपेरिमेंट्स पे कंटिन्यूसली काम किया करते थे. और इसीलिए एक बार उन्होंने बहुत ही जोकिंगली क्या कहा था? ही रिकॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क. उनका जो वर्क प्लेस था, उनका जो ऑफिस था, वहाँ पे जो उनकी डेस्क ड्रॉर थी, ओके, उस ड्रॉर को उन्होंने रेफर किया था एज अ ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, बिकॉज वो फिजिक्स से रिलेटेड ही वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया करते थे, फिजिक्स से रिलेटेड वो न्यू न्यू डिस्कवरीज किया करते थे, राइट. और उन सभी पेपर्स को वो उस ड्रॉर में रखा करते थे. ओके, सो उनके वर्क प्लेस पे, उनके ऑफिस में जो डेस्क ड्रॉर थी, ही रेफर्ड दैट ड्रॉर एज अ ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स. क्लियर? One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Okay, and in the year of 1905, Einstein was having a very famous papers. Okay, and what was the subject? The subject was special theory of relativity. Okay, and according to this theory, time and distance, they are not absolute. Okay, so what is absolute? Let's see. Absolute means complete, or we can say not in relation to anything else. Okay, so Einstein की जो theory थी, that was a special theory of relativity. Okay, according to this theory, time and distance, they are not absolute. Okay, indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. Okay, and what is this theory? Relativity. According to this theory, time and space, okay, they are not absolute. Okay, and indeed, actual में क्या है ये? अगर we are having two perfectly accurate clocks, okay, so Einstein he gave an example and he said that if there are two absolutely accurate clocks, okay, so अगर उन दोनों clocks को अगर हम जर्नी पे ले जाएं, okay, और उनमें से जो एक क्लॉक है वो ज़्यादा फास्ट जर्नी करे, okay, वो रिलेटिव टू दी अदर, okay, कंपेरेटिवली टू सेकेंड जो फर्स्ट क्लॉक है वो फास्टर जर्नी करके अगर आती है, okay, सो आफ्टर दैट जो दोनों ही क्लॉक हैं दे विल नॉट शो द सेम टाइम. ओके, सो दिस इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ओके, एंड आई एम वेरी मच श्योर आप लोगों ने भी साइंस में, फिजिक्स में पढ़ी है ये थ्योरी जो है. इसके बारे में आइंस्टाइन के वर्क के बारे में आप सबने पढ़ा है, एंड यू ऑल नो अबाउट दिस थ्योरी, दैट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ओके, सो ही वाज हैविंग दिस थ्योरी दैट टाइम एंड स्पेस दे आर नॉट एब्सोल्यूट. ओके, दे डिपेंड्स ऑन मैनी अदर फैक्टर्स. ओके, सो देन ही गिव दिस एग्जांपल ऑफ टू क्लॉक्स. ओके, टू क्लॉक्स हैं, दोनों को हमने सेम टाइम पे फिक्स कर दिया है. ओके, लेकिन हम दोनों क्लॉक्स को अलग अलग मूव करते हैं, जर्नी
पे ले जाते हैं, और जो वन क्लॉक है वो कंपेरेटिवली टू दी अदर ज़्यादा फास्ट मूव करती है, ओके। और फिर जब हम वापस दोनों क्लॉक्स को वापस हम एक साथ लाएंगे, देन वी विल सी दैट बोथ द क्लॉक्स दे आर नॉट हैविंग द सेम टाइम, ओके। सो दिस इज द थ्योरी. From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. Okay, so जो theory थी that is the theory of relativity. और इसी theory से क्या होता है? From this followed the world's most famous formula. Okay, and what is the formula which describes the relationship between mass and energy? Okay, so what is the relationship between mass and energy? इसको describe करने का जो formula था, okay, वो formula इसी theory से फिर डिप्राइव्ड हुआ था, इसी थ्योरी से के बेस पे आगे चल के वो फॉर्मूला जो था वो क्रिएट हुआ था, द फॉर्मूला दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी. ओके, सो लेट्स सी द फॉर्मूला फर्स्ट. व्हाट इज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज E इक्वल्स टू mc स्क्वायर. ओके, सो इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E stands for energy, m for mass and c for the speed of the light in a vacuum, that is about 3 lakh kilometers per second. Okay, so this is the formula E equals to mc square. Okay, so you all have heard, you all have used such formulas in your physics. Okay, when you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That's relativity. Albert Einstein. Okay, so Albert Einstein, he explained his theory of relativity. Okay, one more time he gave this example. So let's understand the example. So he actually wanted to say कि जो time है, okay, so time depends on many other factors. Okay, so in this example he is saying that time depends upon the company. Okay, हम किस कंपनी में हैं, क्या हम उस कंपनी को enjoy कर रहे हैं, so उस पे time जो है वो depend करता है. How? Let's see. So he said that when you sit with a nice girl, okay, or we can say when you are in a very good company, when you are enjoying your company, okay, then for 2 hours, okay, but it seems like 2 minutes. Okay, so he wanted to say that if you are having a very good company, if you are enjoying your company, okay, तब आपके लिए जो 2 hours है वो भी कैसे लगेंगे? It is like 2 minutes only. Okay, so time जो है आपको लगेगा कि that time flies. जो 2 hours है वो भी बिल्कुल 2 minutes जैसे end हो जाएंगे. Okay, but when you sit on a hot stove, okay, लेकिन अगर हम एक ऐसी सिचुएशन में है जिसको हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे, that is like a burden on us. Okay, just like if we are sitting on a hot stove for 2 minutes. Okay, so अगर हम 2 minutes के लिए भी अगर ऐसे सिचुएशन में है, ऐसे कंडीशन में है, और वी कैन से ऐसी कंपनी में है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसको हम टॉलरेट नहीं कर पाते, देन इट सीम्स लाइक 2 hours. ओके, सो ऐसे में जो 2 minutes हैं वो भी हमें ऐसे लगेगा कि कितना लंबा टाइम है, हमें लगेगा इट इज़ जस्ट लाइक ऑफ 2 hours. ओके, सो दिस इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. ओके, सो आइंस्टाइन ही wanted to say that time, space, okay, ये सब जो चीज़ें हैं they are not absolute. Time depends on many other factors. Okay, like in this example, time depends on the company that we are having. Okay, so if we are in a good company and we are enjoying, then हमको ऐसा लगेगा कि time कितना जल्दी पास हो रहा है. Okay, but on the contrary, if we are in a company that हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, और we are in a situation जो कि बहुत टफ है हमारे लिए, so ऐसे में 2 minutes भी ऐसा लगेगा कि कितना लंबा टाइम है. ओके, सो दिस इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. क्लियर? While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Okay, so when Einstein, he was totally into this physics, okay, and he was solving the most difficult problems in physics. Okay, so at that time his private life, okay, it was unraveling. Unraveling means starting to fail. Okay, so उनकी जो private life थी, और we can say जो उनकी personal life थी, okay, वो बिल्कुल सही नहीं चल रही
की थी. Why? Let's see. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. Okay, so what was happening in Albert Einstein's private life, or we can say personal life? So Albert, he wanted to marry Mileva. Okay, so you know, we have read earlier that he was very much interested in this girl. Okay, so Einstein, he actually wanted to marry with her. Okay, when right after finishing his studies. Okay, but what was the problem? But his mother was against it. Okay, so Einstein की जो mother थी, she was totally against with this marriage. Okay, she thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. Okay, और जो आइंस्टाइन की मदर थी, why she was against of this marriage? उनको क्या प्रॉब्लम थी मिलेवा से? So you know, according to Einstein's mother, उनको ऐसा लगता था कि जो गर्ल है मिलेवा, okay, who was actually 3 years older than Einstein. Okay, so उनको लगता था that she is too old for him. Okay, so जो age difference था between मिलेवा and Einstein, and मिलेवा, she was 3 years older than Einstein. Okay, so according to Einstein's mother, she was too old for her son. Clear? She was also bothered by Mileva's intelligence. Okay, and you know, second thing, first thing तो क्या थी? It was the age difference between Mileva and Einstein, and the second thing जिसकी वजह से you know, Einstein की जो mother थी, she was totally against with this marriage. So second thing was that she also bothered by Mileva's intelligence. Okay, so we have read earlier also that Mileva, वो भी उसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने एजुकेशन ली थी जहाँ से आइंस्टाइन ने ली थी. सो मिलेवा, शी वॉज ऑल्सो यू नो वेरी इंटेलिजेंट गर्ल. ओके, और उनकी जो इंटेलिजेंस थी, दैट वॉज अ प्रॉब्लम फॉर आइंस्टाइंस मदर. ओके, शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड. ओके, सो आइंस्टाइन की मदर कहा करती थी दैट यू नो दैट गर्ल मिलेवा, शी इज जस्ट लाइक अ बुक. ओके, एंड शी इज जस्ट लाइक यू. आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ. ओके, सो व्हेन आइंस्टाइंस मदर, शी वॉज हैविंग यू नो सो मच डाउट्स अबाउट दैट गर्ल मिलेवा. सो आइंस्टाइन को पता था कि उनकी जो मदर है वो इस यू नो मैरिज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है. शी इज़ टोटली अगेंस्ट विद दिस मैरिज. सो फाइनली आइंस्टाइन ने क्या किया? ही पुट द वेडिंग ऑफ. ओके, सो उन्होंने ये वो वेडिंग यू नो नहीं की, उन्होंने वो मैरिज नहीं की. राइट? The pair finally married in January 1903. Okay, and had 2 sons. Okay, so उस टाइम आइंस्टाइन ने नहीं मैरिज की थी. वाई? बिकॉज जो आइंस्टाइन की मदर थी, शी वॉज टोटली अगेंस्ट विद दिस मैरिज. ओके, बट फाइनली द पेयर मीन्स आइंस्टाइन एंड मिलेवा. ओके, सो फाइनली दे मैरिड व्हेन इन जनवरी 1903. ओके, एंड आफ्टर द मैरिज दे हैड 2 sons. क्लियर? बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड. ओके, बट ये जो मैरिज है ये लास्ट लॉन्ग नहीं रहती है, एंड फ्यू ईयर्स लेटर जो मैरिज थी इट फॉल्टर्ड मीन्स इट बिकेम वीक. ओके, उनकी मैरिज में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गई थी, काफ़ी यू नो डिस्प्यूट होने स्टार्ट हो गए थे. ओके, मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ. ओके, सो क्या प्रॉब्लम थी इनकी मैरिज में? जो मिलेवा थी, ओके, शी वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन. ओके, सो वॉट इज एम्बिशन? एम्बिशन मीन्स अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग और टू बिकम समथिंग. ओके, सो मिलेवा, शी वॉज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट. ओके, लेकिन धीरे धीरे जो उनकी इंटेलेक्चुअल एम्बिशन थी, राइट, वो एम्बिशन उनकी यू नो कम होती जा रही थी, एंड शी वॉज बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ. ओके, सो मिलेवा अब बस एक हाउस वाइफ बन के रह गई थी. शी वॉज हैविंग 1 हाउस टू टेक केयर, शी वॉज हैविंग 2 sons. ओके, और मिलेवा की जो लाइफ थी वो वहीं तक रह गई थी. ओके, और ये चीज़ मिलेवा के लिए यू नो प्रॉब्लम बनती जा रही थी, बिकॉज शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, शी वॉज हैविंग हर ऑन एम्बिशंस. ओके, लेकिन उनके जो एम्बिशंस थे वो पूरे नहीं हो रहे थे. ओके, आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919. ओके, सो देयर वर सो मैनी प्रॉब्लम्स, देयर वर सो मैनी डिस्प्यूट इन दैट मैरिज दैट यू नो दे वर हैविंग कॉन्स्टेंट फाइटिंग. ओके, एंड आफ्टर ईयर्स ऑफ दिस कॉन्स्टेंट फाइटिंग फाइनली द कपल आइंस्टाइन एंड मिलेवा they finally divorced when in the year of 1919. Okay, Einstein married his cousin Elsa, the
same year. Okay, so after this divorce, Einstein he married, okay, his cousin, and the name of the cousin is Elsa, the same year. It means only in 1919. Okay, so 1919 में उनका divorce हो जाता है मिलेवा के साथ. After that, you know, he remarried, okay, with his cousin, and the name of the cousin is Elsa. Okay, and when in 1919 only. Okay, so this is about Einstein's personal life. Okay, so we will know more about him when we continue the chapter. So see you in the next video. Thank you.